Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture 2. Okay, so we start with the scientific method information because this is a science subject, that is chemistry, and we have to study stepwise that how we find the solutions to the problems. So this is the main theme and the route by which we follow to get the required results. So the topic is solving problems using a scientific approach. And this is the way we deal in chemistry. So if we go to the objective, so the objective is to recognize the steps scientists use in solving problems. So this is the objective of this lecture and the course content. So if we move to the next slide, there is the history which is given, and you know the initial terminologies as well as the meaning of all these things. Alchemy, alchemy is developed, it's the developed the tools, alchemy developed the tools, alchemy chemistry ke liye, we can use this. So it developed the tools and techniques for working with chemicals. Purely when you are working with chemicals, so you can use the terminology alchemy. Chemistry word actually comes from alchemy. Okay, let me get my pen. Red color is okay. So this is the chemistry word. This chemistry is actually comes from the word alchemy. और आपको ये पता है कि alchemy is the tools and techniques working for chemicals. So if we go back to the history, the 400 BC में it was practiced in China and India. Now this alchemy has two sides. Number one is the practical side, and number one is the practical side, which means that the techniques for working with metals, glass, dyes, etc. And the second side is mystical concepts like perfection. So in the last lecture, I told you that mostly the Arabs, they spend the entire time to convert metals into gold. So gold was the perfect metal. So they tried to convert every metal into gold. So that's the mystical side. If we go next slide. So the topic is what is meant by an experimental approach. Now in 1500s, a shift started from alchemy to science. So alchemy जो है, उसमें एक paradigm shift जो थी that was made, and इसको एक new name से जो था वो देखा गया, that is the science. So if we go to the history, King Charles too was the supporter of the sciences. So we can say that this era is the beginning of the scientific knowledge and sciences. So Royal Society of London for the promotion of natural knowledge. Now this society worked a lot for the promotion of this natural knowledge. They encourage scientists to use more experimental evidence and not philosophical debates. The point is that science is the field where we do not need to depend on theory or the concepts unless or until you use that knowledge and concept in the society. So application is very, very crucial for any scientific knowledge. Next, more experimental evidence. What's that? They need some more experimental evidences. For science always need experimental evidences. So there are three ways. If you see these three ways, the whole scientific method is explained. Number one is the observation. Number two is hypothesize, and number three is performing experiment. It means that there are three major steps for the scientific methods. You observe something. Okay? For example, हमने COVID-19 को, we observe it, and we observe by the condition of the patients. Okay? Propose possible solutions or explanations.
इसमें आप बताते हैं कि मे बी ऐसे हो गया हो, मे बी कॉन्टैक्ट में हो गया हो, मे बी सोशल डिस्टेंस नहीं किया इस वजह से हो गया, मे बी एयरबोर्न है ये वायरस इसकी वजह से हो गया. So there are a lot of possible uh, explanations to recognize the problem that is the COVID-19. So when you talk about the proposed possible solutions, it means that you are actually hypothesizing the thing, observation. Last is decide which solution is best. So that's for COVID-19. All the world is performing experiments to uh, get the solution, best solution to avoid this COVID-19, how to kill this COVID-19. So these basically, if you see, there are only three major steps. Number one is the observation, number two is the hypothesis, and number three is the experimentation. Lavoisier, he was the great scientist, chemist था ये in 1700s, 17th century का. उसने he did a very good work. He helped transform chemistry from a science of observation to the science of measurements. And this science of measurement is still used today. एक तो होता है आप ऑब्जर्व करते हैं एंड यू विल शेयर योर आइडियाज. एक होता है कि आप मेजरमेंट्स देते हैं. मेजरमेंट्स मींस ऑथेंटिक वैल्यू जो है दैट इज प्रोड्यूस टू सपोर्ट द ऑब्जर्वेशन. सो वैल्यूज जो थी, मेजरमेंट्स जो थी, वो इंट्रोड्यूस हुई. फॉर एग्जांपल, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट देनी है कि बर्निंग में what is burning. So you cannot explain different things for the burning. You have to be very exact, specific that oxygen is required for burning. So oxygen is the main thing in burning. So you have to give the measurements. You have to give the specific reason, specific number, specific type, specific property, which is important. Now the objective is illustrate the scientific method. This is I'm going to give you in the activity also. So using scientific thinking and scientific method, illustrate the scientific method. Okay. So मैं आपको एक layout इसका दे रही हूँ. I'm giving you the layout. What you do, you take COVID-19 or any else. कोई भी observation आप देखते हैं. आप ये भी देखते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है. आप यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से लॉट ऑफ डिजीज़ेस जो हैं वो हो सकती हैं. कुछ भी आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. तो आपने हाउ यू कैन यूज साइंटिफिक, हाउ कैन यू कैन यूज साइंटिफिक thinking and scientific method. So by this I'm going to explain to you how do you do it, and then I will upload the activity, time bound activity, for I will give you 1 week to complete this activity. So let's start the working on the activity. Number one, scientific method, you need to understand very carefully that it is a logical approach. What is this? A logical approach which is used to solve problems and to give answers to the questions which need answers. So इसके वही बात हो जाती है कि 3 steps होते हैं. First step is the observation. You start observation, noting, आप note करते हैं, ठीक है, record करते हैं informations and facts. Second, फिर आप एक explanation देते हो उन observations और facts को, ठीक है, a proposed explanation for the observation. ठीक है. और the observation must be tested by an experiment. ये नहीं कि randomly आपको ये जो है propose कर देंगे explanation. No, आपको ऐसी explanation देनी है जिसको कि हम experimental भी prove कर सकें. This is called hypothesis. So steps involved in scientific method. अब observations जो हैं वो आप अपनी senses को use करते हो, right? तो आप observations जो हैं उनमें
दो पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. नंबर 1 इज द क्वांटिटेटिव, आपकी मतलब ऑब्जर्वेशन होती है, एंड नंबर 2 इज द क्वालिटेटिव. फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटेटिव होती है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और क्वालिटेटिव होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन नंबर्स की होती है, राइट. So for example, I'll give you the example. For example, today the temperature is 95 degree Fahrenheit. So मैंने quantitative में आपको specifically बता दिया कि this is the temperature right now. अब qualitative मैं इसको कैसे बताऊंगी? I will use this noun over here, hot, this adjective over here. Since the temperature is 95 degree Fahrenheit, so it's very hot. So quality बताती है कोई चीज कैसी है, right? उसके बाद सेकंड स्टेप में आई एम गोइंग टू मेक माय हाइपोथेसिस. मेरा जो आइडिया है वो मैंने अब जनरेट करना है, ऐसा आइडिया विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. सो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हमने गेस करना है, एजुकेटेड गेस करना है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमने देनी है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जो हाइपोथेसिस है विच यू कैन मेक इज के मोस्टली द कोविड-19 वाज स्प्रेड बाय द people which came from different countries, and there were no SOPs at that time on airports, and especially the people who came from China and Iran. So ये हमारी general एक concept है, एक hypothesis. Now it's up to you how you go for performing the experiments. So आप इसको hypothesize करते हैं. उसके बाद when you hypothesize something, then you make a series of experiments to prove that hypothesis. आपको एक series develop करनी होती है, आप new information gather करते हो to decide whether the hypothesis is valid or not. So हम अगर एक छोटा सा टेबल देखें, flow sheet diagram. So observation, first is the observation, second is the hypothesis, third is the experiment. अब आपने देखना है इसको कि हम ये ब्लू बॉक्स को पर्पल बॉक्स के साथ लिंक कर रहे हैं. When you are successful in these three steps, you make a law, okay, or you can make a theory model. जो theory model होता है वो predict कर देता है something. जो predict करता है उसको experimentation से prove किया जाता है, और उसी theory को फिर एक modified theory बना दिया जाता है. So two possibles are there. One is the law, another is the theory. तो ये दो आपके valid points आ गए. So scientific methods में we deal with variables or factors that can change. So there are two types of variables or factors. Number one is the manipulated variables, जो जिन्हें हम independent variable कहते हैं, जिन्हें हम change कर सकते हैं. For example, अगर मैंने मैंने in my one of the research, I synthesized paracetamol syrup for children by using the color of watermelon, ठीक है, color and the flavor, ठीक है. तो फिर मुझे उसको चेक करना है कि to what temperature it is stable. तो मैं different change करके temperatures पे उसको storing करूँगी, and I will see कि what would be the result. So same is here. So ये change होते हैं, manipulated variables होते हैं, आप इनको change करके outcomes को note down करते हैं. Second होता है responding variables, जो कि dependent होते हैं variables, जो भी आप observed और measured करते हैं during experiment. आप change नहीं कर सकते इसको, बल्कि आप इनको observe करते हैं, measure करते हैं during the experiments. और सब for results to be accepted, the experiments needs to always produce the same result. अगर एक ही methods, different methods से एक same problem के लिए if you are doing the experiments, then the results must be the same. और अगर different results आ रहे हैं, आपका different है, मेरा different है, problem same है, experiments जो हैं वो हम different तरह से उसको कर रहे हैं, और results same नहीं आ रहे for the same problem, it means कि आपकी experimentations में flaw है.
फिर आती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स को हम डिज़ाइन करते हैं टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। यहाँ पर हम वी नीड टू टेक केयर ऑफ थ्री वर्ड्स, इफ एंड देन। सो इफ में हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वी बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन आवर बैकग्राउंड नॉलेज। जैसे कि कोविड-19 में हम बिलीव करते हैं द रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान इज ड्यू टू द पैसेंजर्स which arrived in Pakistan from Iran। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लैंड किए हैं ईरान से या चाइना से। सो ये मेरी एक स्टेटमेंट है, मैं इस पर बिलीव करती हूँ, राइट। एंड हम कब यूज करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंटली, अब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, और देन व्हाट वी प्रिडिक्ट विल बी द आउटकम। सो मैंने क्या मतलब प्रिडिक्ट करना है कि क्या होगा। टू पॉसिबल होते हैं यहाँ पर हमेशा when you work with if and then, so there are always two possible answers. Number one is either the hypothesis is right or the hypothesis is wrong. You cannot go in the middle. Okay, so we gather data and observations by doing the experiments, and then we modify the hypothesis and repeat the cycle. Okay, so this is the way. Now outcomes over the long term. अब हो सकता है कि what would be the outcomes of your experiments, timely तो वो ठीक है, but for the long term they are not conducive. So what theory हम develop करते हैं, एक model भी करते हैं जिसमें कि क्या होता है theory. What is theory? A set of well tested hypotheses that give an overall explanation of some natural tested hypotheses होते हैं उसमें, और वो एक किसी भी फिनोमेना के बारे में आपको सेम जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल दुनिया इन एन एवरी बुक व्हेन यू ओपन द बुक एंड फाइंड बिग बैंग थ्योरी, दे हैव द सेम रीजंस। फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये थ्योरी मॉडल है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिसने भी इसको लिखा है ऐसे ही लिखा है, F इज इक्वल टू ma। Then we come to natural law, जिसे कि हम scientific law कहते हैं। The same observation applies to many different systems. अब जो भी हमें observations मिलती हैं, हम उसको किसी भी system में अगर apply कर देते हैं, for example Newton's law of gravitation, वो आप apply कर लें, सब there will be the same। तो ये लॉन्ग टर्म आउटकम्स हैं, ये लॉन्ग टर्म। लेकिन जो कोविड-19 को करंटली इफ यू स्टडी द कोविड-19, so right now what they are having the outcomes, maybe in the long term they need to be changed. Okay, it is not long term outcome कि हम जो बीमार हो रहे हैं that is due to कोविड-19। हो सकता है कि इसका कोई और ही आपके सामने रिजल्ट आ जाए आफ्टर sometimes। लॉ वर्सेस थ्योरी। अब लॉ और थ्योरी में क्या है, द लॉ समराइजेस व्हाट हैज हैपेंड, और जो थ्योरी है जैसे कि बिग बैंग जो था लॉ था, थ्योरी मॉडल हम पेश करते हैं, इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंड। सो लॉ बताता है, समराइज करता है कि किसी इन एनी टाइम व्हाट हैज हैपेंड, और थ्योरी जो है it's the way, it's the way or attempt to explain why it happened. This changes as new information is gathered, और theory change होती रहती है जैसे कि new information आती है। तो right now बिग बैंग थ्योरी जो है वो लॉ है, लेकिन कोविड की जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो थ्योरी में आ रही है, with the passage of time they can be changed. Now this is the model, okay? So I'm not going to explain this model because it is the part of the activity. So आपने इस मॉडल को अच्छी तरह स्टडी करना है, and then you have to design your own model. ठीक है, your homework is, your activity is, right, you have to design this. For example, अगर आप observations में आप कोई भी एरिया साइंटिफिक ले लें, कोविड-19 ले लें, डेंगू ले लें, नॉइज पॉल्यूशन ले लें, साइट पॉल्यूशन ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, आप वाटर की कोई प्रॉब्लम उठा लें, राइट।
क्यों मैं आपको ये एक्सरसाइज देना चाहती हूँ? बिकॉज यू नीड साइंटिफिक केमिकल एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं होगा, आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वट एवर आई विल टीच इन द फ्यूचर। सो आपको थोड़ा सा फॉर 1.5 month जो अप्रोच है टूवर्ड्स दी थिंग्स, वो साइंटिफिक करनी है, प्योरली केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये एक मॉडल मैं आपको दूंगी, अभी अपलोड हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। आपके पास टाइम तकरीबन 1 वीक है, आपको मंडे को इसको सबमिट करना है। डेडलाइन जो है वो मंडे की होगी, राइट? मैं आपको बाउंड नहीं करती, प्लीज डू एज पर योर कन्वीनियंस, बट ऑब्जर्व द डेडलाइंस, राइट? So, when scientists share ideas by collaboration and communication, they increase the likelihood of successful outcome. यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि discussions and forums ये बहुत ज़रूरी होती हैं, वेयर साइंटिस्ट जो हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं और इस तरह ज़्यादा लोग किसी आइडिया की तरफ जो है वो इंक्लाइंड करते हैं और फिर हमारे लिए होता है। तो हाउ इज कम्युनिकेशन डन? इज द इंटरनेट रिलायबल इंफॉर्मेशन? दीज आर द क्वेश्चंस वी नीड टू बी आंसर्ड। ठीक है, सो ये एक और मैंने एग्जांपल इसमें दी है, आपको स्लाइड दी है, ये आपको हेल्प कर सकती है आपकी अपनी डिजाइनिंग में। ठीक है, आप डिज़ाइन करेंगे, आप डिज़ाइन कंप्यूटर पे डिज़ाइन को आप क्लिक करेंगे या स्मार्ट आर्ट के पास आप चले जाएं, स्मार्ट आर्ट को आप करें, तो स्मार्ट आर्ट में आपके पास बेहतर ऑप्शंस हैं, आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप कि यू understand this thing very carefully, you understand the scientific knowledge and everything. Thank you so much.